بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ I hope you all are in good health. Many congratulations on your promotion to the next class 9. This is a Pakistan studies book of class 9. Today we will discuss the first lecture of this book, book 9. Topic: CR formula. Chakravarti Raj Gopal Acharya. So this is the first video lecture. So stay with us. But before going to start to study this topic, we would like to discuss some words meaning. Let's see. Withdrawal, واپسی. ٹرانسفر آف پاور، اقتدار کی منتقلی. اگنور، نظر انداز کرنا. ٹرکری، دھوکہ، فریب. سینٹیمنٹس اینڈ فیلنگس، جذبات اور احساسات. کنٹری، خلاف، تضاد. ولنگ، مرضی. ویئر ان، جس میں. اپروپریٹ، مناسب. کنفرم، تقویت دینا، مستحکم کرنا. لبریشن، آزادی. کوآپریٹ، تعاون. پریجوڈائس، تعصب، طرفداری. میوچول، باہمی، مشترکہ. کنسرن، تشویش. پرسنل اٹیک، ذاتی حملے. پروٹیسٹ، احتجاج. انڈیکیٹڈ، اشارہ کرنا، نشاندہی کرنا. ایمبیگوٹیز، ابہام، شک. ریلکٹنٹ، نارضامند، بے دل. So these are the difficult words. Now come to the topic. CR formula. Chakravarti Raj Gopal Acharya. Chakravarti Raj Gopal Acharya. First of all, we would like to introduce this person. Chakravarti Raj Gopal Acharya was an Indian statesman, writer, lawyer, and independence activist. In 1937, CR was elected the Prime Minister of the Madras Presidency and served until 1940, when resigned due to the Britain declaration of war on Germany. Later educated, promoted cooperation over Britain's war effort and opposed the Quit India movement. He resigned Congress in 1959 and founded Swatantra Party in 1959. This party fought elections against Congress in 1962, Congress in 1962, 1967, and 1971 elections. He died on 25th December 1972. So he was a prominent figure in the history. So CR, today we will discuss about the views of CR about Muslim League and the other leaders and about the Pakistan. So what their thoughts and what their formula, what he presented in his formula. So we all discuss in this topic. Okay, now come to the topic. First of all, we would like to read this topic. The first paragraph. During the Second World War, Congress made great effort for the withdrawal of British government from India and transfer of power to the Congress. In these efforts, the Congress ignored the Muslim League. The British had no the Congress trickery. On the other hand, Muslim League was being organized under the leadership of Quaid-e-Azam, and they made it clear to the British that the sentiments and feeling of 8 crore Muslims of India cannot be ignored. In such a situation, when Congress and Muslim League
adopted different ways. A Congress leader of Madras, Chakravarti Rajgopal Acharya, tried to bring together both the parties because he had realized that the Congress could not make any agreement without the cooperation of Muslim League. In this way, the British government will not be agreed to accept any demand of Congress contrary to the willing of the Muslim League. Gopalacharya put up a resolution to the Madras Assembly wherein the Congress was asked to accept demand for Pakistan with appropriate change and hold dialogue with Muslim League regarding the federal government. These, in these topics, uh, we know that the first paragraph of this topic, uh, which is related to the demand of the withdrawal of British and the transfer of power to the Congress. In this whole process, if we summarize some points, this whole process, the Congress ignored the Muslim League. While on the other hand, Qaid said that the sentiments and feelings of the 8 crore people, Muslims of India, cannot be ignored. Definitely, both the parties adopted different ways on the issue of transfer of power. Between them, the Congress leader of Madras uh, Assembly, Chakravarti Rajgopalacharya, tried to bring together both the parties because you know that for any agreement, the cooperation of Muslim League is must. On the other hand, the British government did not agree to accept the demand of Congress opposite to the consent of the Muslim League. In such situation, CR came forward and put up a resolution in the Madras Assembly and asked the Congress to accept the demand of Pakistan and hold dialogue with Muslim League regarding federal government. So this was the first paragraph. Then come to the points. First of all, we would like to read it. The important points of the CR formula are the following. The important points of CR formula are the following. The Muslim League will confirm the demand of Indian liberation and cooperate with Congress regarding the establishment of temporary government in the interim period. This is the first point which he elaborated. The second, after the war, a commission will determine the Muslim majority district in the northwest and northeast. In these areas, separation from India will be decided through referendum. And if the majority decide for separation, then this will be imposed without any prejudice. In the third point, in case of separation, a mutual agreement will be made regarding defense, commerce, communication, and other important matters. So these are the three important points of Chakravarti Rajgopalacharya, who presented in the Madras Assembly in the form of a resolution. The first point is related to the cooperation. The Muslim League should cooperate and confirm the demand of liberation. This is the first point which he elaborated in his points. The Muslim League confirm the demand of liberation, and then Muslim League also cooperate Congress regarding the establishment of interim government. इंटरम गवर्नमेंट अबूरी हुकूमत आर्जी हुकूमत बनाने में मुस्लिम लीग जो है कांग्रेस की इमदाद करे, ताउन करे उसके साथ, और इंडिया की आज़ादी में भी जो है कांग्रेस का साथ दे. ये उसका पहला पॉइंट था. द सेकेंड पॉइंट इज आफ्टर अ वॉर, जंग के बाद, आफ्टर अ वॉर कमीशन विल बी डिटरमाइन द मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द नॉर्थ ईस्ट. एक कमीशन बनाया जाए और कमीशन बनाकर बाकायदा जो है वो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट का सर्वे करे और वहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी जो इजला है उनका पता लगाए. इन दिस एरियाज सेपरेशन फ्रॉम इंडिया विल बी डिसाइड थ्रू रेफरेंडम. और इन इलाकों में आज़ादी जो है इन इलाकों को दी जाए, लेकिन रेफरेंडम के ज़रिए, वोट के ज़रिए वहाँ के लोगों से पूछा जाए कि आप किसके साथ जो है शामिल होना चाहते हो. इफ़ द मेजॉरिटी डिसाइड फॉर सेपरेशन, अगर मेजॉरिटी जो है अक्सरियत जो है वो डिसाइड करती है
تو پھر اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے ان لوگوں کے حق میں جن کے ساتھ یہ ملنا چاہتے ہیں، اور اس حق میں، اس فیصلے میں کوئی تعصب نہ ہو، نو اینی پریجوڈائز، کوئی تعصب نہ ہو. There will be no prejudice. This decision should be imposed after the willing of majority, and it should be imposed without any prejudice. کسی بغیر تعصب کے کوئی بھی اس میں نہ ہو. And in his third point, he discussed the when both country separated from each other, so then a mutual agreement should be signed, should be made regarding defense, commerce, and communication and other important matters. اس کے بعد جب دو ملک علیحدہ ہو گئے، علیحدہ جو ہے ریاستیں بن گئی، تو پھر ان میں سے جو ہے یہ دونوں ممالک آپس میں ایک معاہدہ کرے، اور وہ معاہدہ جو ہے وہ دفاع، کامرس اور کمیونیکیشن مواصلات جو ہے، اور دوسرے اہم معاملات جو ہے اس کے متعلق جو ہے یہ اپنا جو ہے ایگریمنٹ کرے، معاہدہ کرے. اس کے بعد جو ہے آ جاتا ہے نیکسٹ جو ٹاپک ہے. The next topic is related to the reaction. So first of all we would like to read, then we will discuss. The Congress showed great concern over these proposals, and the All Indian Congress Committee rejected it with majority. Personal attacks were made on Acharya. He resigned from Congress and Assembly with great protest over this attitude. On the other hand, Quaid-e-Azam indicated certain flaws in formula and pointed out the ambiguities. He told that if Acharya is ready to accept Pakistan, then why he is reluctant to accept Lahore resolution? In spite of all the flaws, CR formula is important in the history because for the first time the Indian partition was accepted in the principle by a Congress leader. So if already you read it and you got some point, the Congress show great concern, تشویش، بڑی تشویش کا جو ہے مظاہرہ کیا، and he rejected these proposals with majority. Congress rejected the proposals of CR. CR proposals was rejected by Congress with great majority, with a big majority. And then personal attacks were started on him. So he resigned from the Congress and Assembly. So this was a Congress reaction. Then what was the Muslim League reaction? Muslim League also rejected the Cripps proposals. The reason is that Quaid-e-Azam showed some ambiguities, and he pointed out that he accepted Pakistan. Then why he did not accept the Lahore resolution? So why he is reluctant to accept the Lahore resolution? So Muslim League and Quaid-e-Azam also rejected the CR formula. But one thing is important, that is in spite of all the flaws, تمام نقصانات کے باوجود CR formula is important in the history because for the first time the Indian partition was accepted by the principle of Congress leader. ایک کانگریس لیڈر نے پہلی دفعہ جو ہے تقسیم ہندوستان جو ہے اس کو ایکسیپٹ کیا. تو یہ ایک بہت جو ہے بڑی جو ہے بہت بڑی کامیابی تھی مسلم لیگ کی. اور اس کے ساتھ جو ہے اچھا اس کے ساتھ ہم کچھ اور بھی جو ہے ڈسکس کریں گے. وہ امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہے، امپورٹنٹ پوائنٹس آپ نے کس طرح جو ہے مطلب ان کے جو پوائنٹس ہے 3 پوائنٹس ہے اس کو کیسے جو ہے ایلابوریٹ کرنا ہے، کیسے ان کو، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. امپورٹنٹ پوائنٹس آف CR فارمولا، امپورٹنٹ پوائنٹس آف CR فارمولا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہیڈنگ ہوگا
क्वेश्चन का जो हेडिंग आप लोगों ने बनाना है तो वो सारा का सारा जो है वो कैपिटल लेटर्स में होगा। यानी हेडिंग जो है हर एक क्वेश्चन का जब तुम आंसर लिखते हो उस आंसर में जो हेडिंग की जो हिस्सा है तो हेडिंग का जो हिस्सा है वो आप लोगों ने बाकायदा तौर पे सारे के सारे लेटर्स जो है हरूफ जो है वो कैपिटल में लिखने हैं। फिर इसके बाद जो है फिर आप लोगों ने ये लिखने के बाद बाकायदा तौर पे आप इसको देख सकते हो। फिर जब हम कोई रिटन काम शुरू करते हैं तो रिटन काम शुरू करने के बाद मुस्लिम का एम हर जगह पे कैपिटल और लीग का एल भी जो है हर जगह पे कैपिटल लिखा जाए और साथ साथ में उसको हाईलाइट भी किया जाए। जो अहम अहम अल्फाज है उसको बाकायदा तौर पे हम हाईलाइट भी करते हैं। तो अल्फाजों को आप लोगों ने हाईलाइट भी करना है और इसी के साथ साथ ख़ासकर डेट हो गए और इसके साथ जो है अहम नाम है, इम्पोर्टेंट फिगर्स है, नंबर्स है, डेट्स है, इनको आप लोगों ने हाईलाइट करना है मार्कर के साथ हाईलाइट करना है। और इसके साथ जो है एक और चीज़ वो ये है कि जब भी आप हेडिंग लिखो तो हेडिंग लिखने के बाद सारे के सारे अल्फाज कैपिटल वो जो है सारे अल्फाज कैपिटल और उसको अंडरलाइन करना है। साथ में अंडरलाइन जो है वो नहीं भूलनी और अंडरलाइन भी करना है। फिर इसके बाद जो है जिस तरह आपको बताया गया और आपने बाकायदा तौर पे मार्जिन लाइंस भी लगाने हैं और मार्जिन लाइंस के बाद बाकायदा तौर पे आप लोगों ने आखिर में 2 लाइन जो है वो छोड़ने हैं। अगर 2 नहीं है तो एक तो ज़रूर छोड़नी है। 2 लाइन को छोड़ के फिर आप नेक्स्ट पेज की तरफ जो है आप लोगों ने जाना है और वहाँ से आप लोगों ने शुरू करना है। और इसके बाद जो है बाकायदा तौर पे शुरू में आप लोग बाकायदा डायग्राम भी बनाना है और डायग्राम बनाकर जो है एक प्रॉपर तरीके से खुशखती का ख्याल रखना है, हाईलाइट, अंडरलाइन। और जब क्वेश्चन ख़त्म हो जाए तो क्वेश्चन के ख़त्म होने के बाद फिर आप लोगों ने बाकायदा तौर पे जो है वहाँ पर एंडिंग लाइन भी ड्रा करनी है। एंडिंग लाइन क्वेश्चन ख़त्म हुआ तो क्वेश्चन ख़त्म होने के बाद आप लोगों ने एंडिंग लाइन ड्रा करनी है। सो दिस इज़ योर फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू। खुदा हाफ़िज़।